Radhe Radhe to all of you. Today we are starting chapter number 1 of science, that is chemical reaction and equation. Now this chapter basically belongs to the family of chemistry. Now in this we are supposed to study about chemical reaction and various types of chemical equation. Before this, if you have not subscribed our channel, then it is request to everyone, please subscribe it and give as many as like possible. Please also transfer or also share the videos to the other children who are supposed to study or come in standard 10. Now we shall start our video. Chemical reaction. Now chemical reaction is a scientific word, or we can say it is a word of chemistry. Now before going towards a chemical reaction, we shall go with a very simple word which is known as chemical change. Now we can say some examples of chemical change. The examples of chemical change are showering of milk, next rusting of iron, fermentation of grapes, cooking of food, digestion of food, respiration, and many more. We can also say in day-to-day life, also we can say when the food is being cooked, when food is being cooked, that is also an example of chemical change. Moreover, ripening of fruits is also an example of chemical change. Now, what is chemical change? In very simple words, chemical change is nothing but chemical reaction. In this, physical and chemical properties of a substance gets changed. Now, which we have studied already in 9th standard. So, whenever chemical change occurs, we can say that chemical reaction has taken place. We shall study now chemical changes with the help of some activities which are given in your books. Here in our book, 3 activities are given, that is activity 1.1, 1.2 and 1.3. But most important activities are 1.1 and 1.3. Now what is activity 1.1? Here, if you see the diagram, in the diagram it is very clear to you that here we take magnesium ribbon. We take one magnesium ribbon and we wipe that magnesium ribbon with the help of some cloth or a paper, sandpaper, so that it becomes easier for us for its experiment. Now, burn the magnesium ribbon with the help of a burner by catching the ribbon with the help of a tongue. एक मैग्नीशियम रिबन लेनी है, सबसे पहले उसको सैंड पेपर से या किसी क्लोथ से साफ कर लेनी है. साफ करने के बाद में उसे एक टोंग से पकड़ के और उसे आपको बर्नर से उसे हीट करना है. जब आप उसे बर्नर से हीट करेंगे तो उस समय यू विल फाइंड सम एसिस, सम एश, मतलब राख falling from that ribbon. Collect that ash in the glass, water glass, or you can say one bowl. अब इसका एक्सपेरिमेंट को अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लीन मैग्नीशियम रिबन with the help of sandpaper, first point. Second, hold it with the pair of tongue and burn it with a spirit lamp or a burner. Next, collect the ash in a water glass and observe. Now, when you observe, you will see here we took magnesium, we burned it in presence of oxygen, hence magnesium oxide is obtained. Now this is our first experiment. So here magnesium got converted, यानी मैग्नीशियम को चेंज हुआ, मैग्नीशियम चेंज हुआ किसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर. नाउ our second experiment, that is 1.3. This is most important experiment. This will also come to you in metal and non-metal chapter. यहाँ पर what we do, we take one distill funnel. Now we put some zinc granules in the distill funnel. Granules का मतलब होता है pieces, टुकड़े.
हम एक क्रिस्टल फनल लेते हैं और फनल के अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स डालते हैं। अब इसके ऊपर एक रबर कॉक लगा दिया जाता है। ऑन दैट रबर कॉक वी पास वन क्रिस्टल फनल एंड वन ग्लास ट्यूब, दो चीज पास करते हैं। नाउ फ्रॉम दिस क्रिस्टल फनल वी अलाउ टू एंटर here from this crystal funnel we allow sulfuric acid, that is H2SO4 or hydrochloric acid, to enter in this flask. That is, from this crystal funnel we add sulfuric acid. Now with the reaction of zinc and sulfuric acid, from this glass tube hydrogen gas is evolved. That is, hydrogen gas comes out from this. In chemical reaction we can write this: Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus your hydrogen gas is liberated. Now again, how to write the step of this experiment? Take a conical flask, that is your first point. Take a conical flask, add zinc granules to it, close the mouth of the conical flask with the help of rubber cork, insert crystal funnel and a glass tube in rubber cork. Now add sulfuric acid, that is H2SO4, sulfuric acid through crystal funnel. After the reaction we will find H2 gas, that is hydrogen gas, evolving out from the glass tube. So up till now we have got some definition and some understanding for chemical change and chemical reaction. I told both are same words. Chemical change is nothing but chemical reaction. Now what happens when a chemical change occurs? When a chemical change occurs, we'll take first of all one example of activity 1.1 and then we shall understand. That is, in activity first we took magnesium. I write here magnesium. It was burned in presence of oxygen, that is oxygen, and when reaction happened we got magnesium oxide. This is magnesium oxide. कभी भी हम केमिकल चेंज बोलते हैं तो केमिकल चेंज में होता क्या है? सबसे पहले तो केमिकल चेंज में हमें मिलता है चेंज इन स्टेट, दूसरा आता है चेंज इन कलर, कलर चेंज होता है। नेक्स्ट आता है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर गेट्स चेंजेस एंड sometimes we get, that is we obtain gases or other material, etc. So these are the changes which occurs in a chemical. These are the changes which occurs in a chemical during chemical changes या तो chemical reactions. Now substance which undergoes, अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज है। एक हमारे पास एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ है हमारे पास, और दूसरा है एरो के राइट हैंड साइड पे। जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, दैट इज नोन एज रिएक्टेंट। नाउ वी हैव टू वर्ड्स विथ अस, दैट इज वन इज रिएक्टेंट एंड अनदर इज प्रोडक्ट। अब हम दो वर्ड समझते हैं। पहले तो रिएक्टेंट किसे कहते हैं और फिर प्रोडक्ट किसे कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शन या तो केमिकल इक्वेशन। अब हम आ जाते हैं एक हमारे नए टॉपिक के ऊपर जिसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के लिए जरूरी चीज होती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट किसे कहेंगे? सब्सटेंस विच अंडरगोज केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन। सब्सटेंस, आई एम राइटिंग हियर, substance which undergoes
chemical change in reaction is known as reactant। इसी तरह से हमारे पास दूसरी डेफिनेशन होती है जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट किसे कहेंगे हम? न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस इन रिएक्शन। तो हमारे पास दो डेफिनेशन आ जाती है, एक रिएक्टेंट की और एक प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट की डेफिनेशन होता है सब्सटेंस विच अंडरगोज केमिकल चेंज इन रिएक्शन, इसे हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल चेंज इज नोन एज रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन के अंदर, see as I told you again, here onwards we are on the new topic which is chemical equation। यानी केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड। यानी रिएक्टेंट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आप सब लोगों के घर पे आपकी मम्मी खिचड़ी बनाती होगी, तो जब वो खिचड़ी बनाती है तो वो क्या करती है? पहले दाल लेती है, फिर चावल लेती है। तो जो दाल और चावल दोनों लिए हैं उनको क्या कहेंगे आप? रिएक्टेंट कहेंगे। दाल चावल को किस में डालती है? कुकर के अंदर डालती है, फिर उसके अंदर वाटर ऐड करती है। तो अगर मैं इस चीज को रिएक्शन के फॉर्म में लेके जाऊं तो मैं यहां पे पहले लिखूंगा दाल प्लस राइस, तो ये हो गया मेरा रिएक्टेंट। इसको आपके पेरेंट्स हीट करेंगे और इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। तो हम चाहें तो यहां पर प्लस वाटर करके आप इसे हीट कर सकते हैं। और जब आपने दाल चावल के अंदर पानी डाला और उसे हीट किया तो थोड़ी देर के बाद जब आपका कुकर एक दो सीटी मारेगा, ऐसे सीटी मारने के बाद आपके पास दो चीज मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? खिचड़ी। तो यहां पे दाल एंड राइस आर रिएक्टेंट एंड खिचड़ी is known as product. Now, in this reaction, as I told you, we have two things in a chemical equation. We have two things, that is, one is reactant, another is product. Now, after this, some new thing. Now, in the chemical reaction, we put an arrow here. So, when we put an arrow, we can say we have two type of reactions. This is, when we put a single arrow, this is known as irreversible reaction. And when you have an arrow like this, then this is known as reversible reaction। अच्छा, irreversible और reversible बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, आप समझ सकते हैं। रिवर्सेबल का मतलब होता है कि जब कभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और प्रोडक्ट को हम वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकें तो हम उसे बोलते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। मगर जब कभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और वो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन। नाउ, आफ्टर राइटिंग दिस ऑल थिंग्स एंड आफ्टर नोइंग ऑल दिस थिंग्स, वी मस्ट